Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So let's begin with this chapter. Today we will talk about lesson number 15 of your class 5 science, that is measurement. Here we will talk about measurement. You know, we measure many things in our day-to-day life like length of clothes, weight of a person, weight of vegetables and fruit. We measure the weight of liquids and capacity. So there are different type of measurement like measurement of length, measurement of mass, measurement of temperature, measurement of time, measurement of capacity and many others. In this chapter we will talk about history of measurement ki kya history hai measurement ki. Next we are going to talk about measurement of length ki what do you mean by measurement of length. Next is measurement of capacity, next one is measurement of mass, and next is measurement of time. You measure the time in different types. Next is the measurement of temperature. Here is the engaging activity. We need to measure many things in our daily life, like such as the length of clothes, measure weight of vegetables, time and temperature. We also measure the amount of liquid like milk, oil and water, and distance from one place to another. Look at the picture given below and complete the sentences. The tailor is measuring the क्या measure कर रहा है? Length ही तो measure करता है of the man's shoulder. So he will click on the length. The fruit seller is weighing the fruits. वो किसको measure करता है? वो weight किसको करता है? Fruits को ही तो weight करेगा. Next is the milkman is measuring the quantity of milk. Milkman क्या measure करेगा? Quantity measure करता है milk की. The doctor is measuring the temperature of the patient. Doctor क्या measure करता है? आपका temperature measure करता है doctor. So let's move to the next page. Here is the history of measurement. Measurement is the process of finding the size of quantity of something. किसी भी size, किसी भी चीज की quantity या size find करने को क्या कहते हैं? Measurement कहते हैं. In early times, people used different body parts like the hand, palm. पहले लोग क्या यूज करते थे? different body parts को यूज करते थे, जैसे hands हो गए, hand span method, palms से measure करते थे to measure length. So length is the size or measurement of something from one end to the other. Length measurement क्या होता है? Length is the size. Length होती है length is the size or measurement of something एक end से दूसरे end पे. So some of the measurers used in ancient times were handspan, cubit and phathon. क्या होते थे? Handspan होता था, cubit होता था और phathon होता कि वो अपने arms को stretch करके जो measure करते थे. So you can see in this picture the length measure between the tip of the thumb and the tip of the little finger of a fully open palm is called handspan. जो इसको क्या कहते हैं? जो this is known as handspan method, जो यहाँ से यहाँ तक की measure कर सकता है, that is handspan. और ये हर person का different होता है because of the size of a person. The length between the tip of the middle finger, जो लेंथ होती है टिप होती है मिडल फिंगर्स के बीच में, दैट इज ओपन पाम एंड द एल्बो इज कॉल्ड क्यूबिट. उसको क्या कहते हैं? क्यूबिट कहते हैं. नाउ अ phathon इज द लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म. phathon क्या होता है? एक लेंथ होती है एक आपके आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स की. सो लेट्स मूव फर्दर. हाउ द लेंथ ऑफ द वेस्ट बॉडी पार्ट्स डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन. Yes, वो डिफर करता है, हर पर्सन का डिफरेंट होता है. Therefore, people realize the need of having some fixed quantities to measure things. A fixed quantity that is used as a standard of measurement is called a unit. जो एक fixed quantity है जो use होती है standard of measurement की तरह, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं unit. So now let us learn about some units of measurement. Here is the activity. Aim to check the accuracy of body parts of measurement. Procedure: compare your handspan. आपको compare करना अपना handspan, cubit and foot and thumb size with that your classmates and teacher. अपने classmates और teacher के साथ and find out if they are same और small और bigger. ये same है आपका, small है या bigger है, ये आपको लिखना है. Write your observation in the table given below. You, your friend और your teacher का handspan लिखना है, cubit लिखना है, foot और thumb कि उनका कितना कितना है. Now conclusion: the size of the body parts vary from person to person. Yes, वो हर person का different होता है and hence the measurement taken using them will also vary. Now measurement of length. What do you mean by measurement of length?
Some of the units used to measure length are millimeter, centimeter and meter and kilometers. हम कुछ मेजरिंग हमारी यूनिट्स है, जैसे मिलीमीटर हो गया mm, सेंटीमीटर हो गया cm, मीटर हो गया m, किलोमीटर हो गया km. मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ लाइक द लेंथ ऑफ अ पेंसिल. वो स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे पेंसिल हो गई लेंथ ऑफ अ पेंसिल. एंड किलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस और लार्ज लेंथ और डिस्टेंस. किलोमीटर हम लार्ज लेंथ और डिस्टेंस मेजर करने में यूज करते हैं, लाइक फॉर मेजरिंग रोड्स. हाउ फार योर स्कूल इज फ्रॉम योर होम इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स. कि आपका कितना दूर है आपका स्कूल आपके घर से, आप किस में मेजर करते हो? मेजर इन किलोमीटर्स. The unit can be changed from one to another. For example, 10 millimeter mm is equals to 1 centimeter. Next is 100 centimeters equals to 1 meter, and 1000 meters is equals to 1 kilometer. Here is the measurement of capacity. The amount of liquid that container can hold is called capacity. जो amount of liquid एक container hold कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? Capacity of that container. So the unit of measuring capacity are liters, milliliters or ml for smaller quantities capacities and kiloliter for larger capacities. So for example, a milkman gives milk in liters. जो एक milkman होता है किस में milk देता है? Liters में देता है. At hospital a nurse takes out blood with a syringe marked in milliliters. जो आपने देखा होगा एक syringe में वो blood निकालती है hospitals में nurse, वो किस में निकालती है? milliliters में निकालती है. The relationship between different units of measurement of capacity is 1000 milliliters is equals to 1 liter and 1000 liters is equals to 1 kiloliter. The beaker is used to measure the quantity of liquid. एक beaker क्या किस लिए measure होता है? यूज होता है एक किसी quantity of a liquid को measure करने के लिए. The capacity of water tank is much more than that of a beaker. ये जो capacity होती है water tank की वो एक beaker से तो बहुत ज़्यादा होती है. So objects like beaker and measuring cylinders are used to measure capacity. तो क्या measure करने के लिए यूज होते हैं? measuring cylinders और beakers एक capacity measure करने के लिए यूज होते हैं. Now measurement of mass. What do you mean by measurement of mass? The mass of a body or an object is the amount of matter present in that particular body or object. तो मास ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अमाउंट कितना अमाउंट एक मैटर में प्रेजेंट है इन दैट पर्टिकुलर बॉडी और ऑब्जेक्ट. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मास इन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास इज किलोग्राम. सो द स्मॉलर यूनिट ऑफ मास आर मिलीग्राम. जो स्मॉलर यूनिट है मास की क्या है? मिलीग्राम है. एंड ग्राम. So for example, you buy potatoes and tomatoes from the green grocer in kilograms. आप green grocer से किस में buy करते हो? Potatoes and vegetables and tomatoes किस में buy करते हो? Kilograms में buy करते हो. The relationship between different units of measurement of mass is 1000 milligrams is equals to 1 gram. जो आपके 1000 milligrams होता है किसके equals होता है? 1 gram के. 1000 grams is equals to 1 kilogram. Here the commonly used devices for measuring masses are physical balance. जो commonly used device होता है क्या measure करने के लिए? physical balance को वो क्या measuring mass is the physical balance or beam balance. Now let's talk about measurement of time. A particular movement in a day is called time. जो एक particular movement होता है एक day में उसको क्या कहते हैं? हम time कहते हैं. Time period is the duration between two events. Time period क्या होता है? एक duration होता है दो इवेंट्स के बीच में. मेजरमेंट ऑफ टाइम हेल्प्स अस टू मैनेज आवर एक्टिविटीज एंड डेली लाइफ एफिशिएंटली. जो मेजरमेंट होता है टाइम का वो हमारी डेली एक्टिविटीज को मेजर करने में यूज होता है हमारे एफिशिएंटली डेली लाइफ एफिशिएंटली. फॉर एग्जांपल वी नो एट व्हाट टाइम वी नीड टू वेक अप इन द मॉर्निंग टू बी इन टाइम. हमें पता होता है हम टाइम पे रहने के हमें किस टाइम पे वेकअप करना है फॉर स्कूल. वी नो एट व्हाट टाइम वी कैन टेक आवर लंच एट स्कूल. हमें पता होता है कि हम किस टाइम पे अपना लंच कर सकते हैं. And what time dinner is served at night. When we know the timings of events and activities are going to take place, we can manage our daily work. हम इससे क्या कर सकते हैं? हम उसी के अकॉर्डिंग अपने डेली वर्क को अकॉर्डिंगली मेजर कर वो मैनेज कर लेते हैं. अब डे इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल ड्यूरेशंस. आपका डे 24 इक्वल ड्यूरेशंस में डिवाइडेड होता है. एंड ईच ड्यूरेशन इज कॉल्ड एन आवर. जो एक ईच ड्यूरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय एच. So smaller durations are measured in minutes. जो आपका smaller durations होते हैं किस में measured होते हैं? Minutes में measured होते हैं. And seconds are in s. And large durations are measured in weeks, months and years. जो large durations होते हैं वो weeks में measure होते हैं, months में measure होते हैं and years में measure होते हैं.
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम इज सेकंड. जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट ऑफ टाइम की क्या है वो सेकंड्स है. द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम आर 60 seconds is equals to 1 minute and 60 minutes is equals to 1 hour. 24 hours is equals to 1 day. 7 days is equals to 1 week. 12 months is equals to 1 year. Here the commonly used devices to measure time includes watches or wall clocks, stop watches, etc. इन सब आप मेजर क्या कर सकते हो, टाइम्स को मेजर कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. लाइक थर्मोमीटर, आप थर्मोमीटर यूज करते हो टेम्परेचर मेजर करने के लिए. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. जो एक डिग्री होती है हॉटनेस की और कोल्डनेस की, किसमें उसको मेजर करने के लिए क्या कहते हैं, उसको टेम्परेचर कहते हैं. द टेम्परेचर इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड यूजिंग द डिग्री सेल्सियस. किसमें रिप्रेजेंटेड होता है, डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंटेड होता है. डिग्री फ़ारेनहाइट में भी रिप्रेजेंटेड होता है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन के. जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की क्या है वो केल्विन के है. The relationship between different units of measurement of temperature is degree Celsius equals to 5 divided by 9, then degree Fahrenheit is minus 2. So these are the relationship between different units of measurement of temperature. The commonly used device for measuring temperature is called thermometer. जो आप अपना फीवर किसमें मेजर करते हो, थर्मोमीटर में मेजर करते हो. Clinical thermometers are used in hospital to measure body temperature. Has a doctor ever Has the doctor ever placed a thermometer in your mouth and asked you to keep still for a minute or so? क्या आपके डॉक्टर ने कभी आपके माउथ में थर्मोमीटर रखा है और आपसे बोला है कि थोड़े मिनट टाइम तक इसे ऐसे रखो? Have you ever wondered why they have asked you to do so? क्या आपने देखा है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा? They were actually checking you have a fever. वो ये चेक करते हैं कि आपको फीवर है या नहीं. In other words, they were checking how hot your body is. कि वो देख रहे होते हैं कि आपकी बॉडी कितनी हॉट है इस टाइम पे. The laboratory thermometers on the other hand is used in a science laboratory. वो किस में यूज होता है, आपकी साइंस लेबोरेटरीज में यूज होते हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स. क्या मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स के ड्यूरेशन में. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.